today our topic is electric current. Now, what is the meaning of electric current? Electric means electrons and current means flow. The flow of electrons in a circuit is called electric current. Now, what is the definition of electric current? The rate at which charges flow by a given cross sections, or we can say as the amount of electrons flow in any cross section in per unit time. Amount of the charges. Electric current depend on the amount of charges, amount of the electron or amount of the charges, and flow in any cross section in per unit time. Per unit time में जितने amount of charges flow करते हैं और electrons flow करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Electric current बोलते हैं. Now, what is the symbol of electric current? It is denoted by capital I. It is denoted by capital I. And we have known about earlier classes that Q is the amount of charge and T for time. That means electric current means the amount of charge and flow in the per unit time. That means Q by T. And what is the unit of electric current? This is ampere. And what is the unit of charge? This is coulomb. And what is the unit of time is second. Then what is the equation of electric current? 1 ampere equal to 1 coulomb by per second. Okay. When electric current, you need two things. One is closed circuit or path of the charges, and second one is a power supply maintained by the potential difference. इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए दो कंडीशन होते हैं. एक तो हम लोग को क्लोज सर्किट चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए चार्जेस को फ्लो करने के लिए, एंड सेकेंड वन इज पावर सप्लाई करने के लिए हम लोग को मेंटेन करने के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग को पावर सप्लाई, जिसको हम लोग सेल या बैटरी बोलते हैं, वो चाहिए. ओके. नाउ व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर हम लोग किसको बोलते हैं? इफ द करंट 1 एम्पियर करंट मीन्स 1 coulomb by 1 second. 1 coulomb charge flow by a given cross section in 1 second. That means 1 ampere. 1 ampere का definition क्या होता है? 1 coulomb charges अगर 1 second में पर second में अगर any cross section में 1 coulomb charge flow करते हैं तो हम लोग उसको 1 ampere बोलते हैं. This is very important topic. 1 ampere का define हमेशा आता है. What is 1 ampere? That means 1 coulomb charge flow any cross section of conductor or wire in 1 second, that called 1 ampere. Now, we have to solve one numerical of electric current. What is the question? A current of 150 milliampere flows through a circuit in 12 minutes. Find the amount of the charge that flow through a circuit. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 150 मिली एम्पियर. कितना मिनट में? 2 मिनट में. देन करंट, व्हाट इज द करंट इन दिस क्वेश्चन? करंट इज I इक्वल टू 150 मिली एम्पियर. दैट मीन्स 150 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर. 1 मिली एम्पियर मीन्स 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर means 10 to the minus 6 ampere. And there is time t equal to 2 minutes. That means 2 into 60 minutes.
it's 120 minutes, and we know that formula I equal to Q by T. Then Q equal to IT. Then we put the value of I and value of Q, value of T. Then 150 into 120 by 1000, that is 18 कूलम. हम लोग क्या बोले, अगर करंट 150 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है एक सर्किट के अंदर 2 मिनट में, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा उस सर्किट के अंदर. करंट कितना, 150 मिली एम्पियर. 150 मिली एम्पियर का मतलब होता है 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर, एंड टाइम 2 मिनट. 2 मिनट मतलब 2 इंटू 60, 120 मिनट्स. एंड वी नो दैट द फॉर्मूला I इक्वल टू Q बाई T, Q इक्वल टू I इंटू T, and Q equal to 150 into 10⁻³ into 120. Then we calculate, we get 118. The answer is 18 coulomb. Correct.